औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड वेल विशर्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे लेक्चर सुनते हैं, हम पे कमेंट्स भी करते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक जो हैं वो पहुँचती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि केमिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर अगर हम लेक्चर देना शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है पूरी उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री ख़त्म नहीं होती। लेकिन हमारा मेन जो कंसंट्रेशन है आजकल वो एफएससी के ऊपर है। तो आज का लेक्चर इसी सिलसिले में जो है वो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एरोमा। तो ओल्ड डेफिनेशन के मुताबिक एरोमेटिक लफ्ज एरोमा से डिराइव किया गया है, which means fragrance, और in उर्दू which means खुशबू। लिहाजा एरोमेटिक कंपाउंड पुराने ज़माने में उन कंपाउंड्स को कहा जाता था which have a typical smell and they were identified by their smell. तो in according to old definition, the compounds which have a typical fragrance or smell or aroma are called aromatic compounds because they can be identified by their fragrance, क्योंकि उनको उनकी फ्रेगरेंस की वजह से आइडेंटिफाई किया जाता था, इसलिए उनको एरोमेटिक कहा जाने लगा। आपने अपने घर में वो जो वॉश बेसन में और बाथरूम में और कपड़ों में टिड्डियों से बचाने के लिए जो गोलियां रखते हैं जिनको नेफ्थालीन बाल्स कहा जाता है, जिनको आम ज़ुबान में फिनाइल की गोलियां भी कह देते हैं, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है नेफ्थालीन। तो आप देखें अगर आपके कमरे में वो गोलियां पड़ी हों तो उनकी कितनी टिपिकल स्मेल होती है कि आप कमरे में एंटर हों तो हर एंटर होने वाला उस स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फलां वाली गोलियां जो हैं वो पड़ी हैं। तो इसलिए उस वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे कंपाउंड भी डिस्कवर हुए कि जिनकी स्मेल नहीं थी लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एरोमेटिक जैसी होती थी, और ऐसे भी कंपाउंड डिस्कवर हुए जो इसका उलट थे, यानी उनकी स्मेल थी, फ्रेगरेंस थी, उसके बावजूद उनकी प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड्स से नहीं मिलती जुलती थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो तब फिर ये सोचा गया कि अब एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन किया जाए। तो ये देखा गया कि हर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज़ ए फ्रेगरेंस और नॉट, बेंजीन लाजमी पाई जाती है। इसलिए फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, those compounds which contains one or more benzene rings in their structures are called aromatic compounds। तो वो कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज्यादा बेंजीन के रिंग हों उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को कॉमनली हम
study of benzene and its derivatives. So you can simply say the study of benzene and its derivatives is known as aromatic compounds. Aromatic compounds are classified according to definition. Those which contains only one benzene ring are called monocyclic aromatic compounds, and those which contains more than one benzene ring are called polycyclic aromatic compounds. Monocyclic, those which contains only one benzene ring. For example, itself benzene is aromatic. Other than benzene, if different substituents are present on benzene but the ring is only one, then they are also called monocyclic. For example, it is phenol, then this is toluene. Similarly, this is benzaldehyde. When aldehyde group is attached with the benzene, so all these are called monocyclic aromatic compounds. And those which contains more than one ring, which contains more than one ring of benzene are called polycyclic aromatic compounds. For example, polycyclic aromatic compounds are further divided into two main types. Number one, isolated ring compounds, and number two, condensed ring compounds. और अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो तो इनका नाम ही आपको नजर आएगा कि डेफिनेशन है आइसोलेटेड मीन्स सेपरेट, condensed means joined. So those in which the rings are separated by a bond or they are separated by an atom. For example, here the two rings are separated by a carbon atom. Here the two rings are separated by a bond. These are known as isolated ring compounds in which the rings are separated from each other. Whereas condensed ring compounds are very important compounds in chemistry, and in such compounds the rings are condensed with each other. Rings are condensed at ortho position with each other, and the main examples are those in which two rings of benzene are condensed is known as naphthalene. Those in which three rings of benzene are condensed is called anthracene, and if three rings are condensed in such a way that one ring is present here, it is known as phenanthrene. So these are the main types of the aromatic compounds.
So this is the general classification of aromatic compounds. Next lecture will be inshallah on the nomenclature of aromatic compounds. Thank you dear students. Allah Hafiz.